Good morning, children. This is your maths class. In previous class, we have finished our exercise 3.2. Now we are going to start with our new exercise 3.3, estimating the sum. So, children, we have already studied in our third class how to do round off of numbers to the nearest tens and nearest hundreds. In the same way, we are going to do round off numbers to the nearest thousand or to the nearest 10,000. We consider the number at the hundreds place or thousands place respectively and move up or down to estimate the numbers. Okay, so let's quickly start with one example. First example is saying that you have to round off to the nearest thousand, and the second question is for nearest 10,000. So, children, here you can see how you can round off the numbers to the thousand. You have to check when you have to round off to the thousand. What you have to check, children? You have to check the hundreds place. Okay, so in this question, 13,880, what you are going to check, आप कौन से place value को check करोगे? You will, if the question is asking to the to do the round of nearest thousand, you will check of hundreds place. आप hundreds place को देखोगे. Okay, if it is greater than or equal to 5, अगर वो 5 से बड़ा है या उसके इक्वल है तो so what you will do, you will increase the thousand digit by 1. आप थाउजेंड डिजिट को 1 से इंक्रीज कर दोगे. इफ अगर वो लेस देन है, ये तो ग्रेटर देन है और ये इक्वल टू है 5 हंड्रेड्स प्लेस का. इफ द नंबर इज ग्रेटर देन, लाइक इफ द नंबर इज 6, ये 5 से बड़ा है ना. यस, तो आप व्हाट यू विल डू, यू विल इंक्रीज थाउजेंड्स प्लेस को you will increase by digit by 1. Okay, so suppose आपकी थाउजेंड प्लेस पे 4 है, आप उसको क्या कर दोगे, 1 से इंक्रीज कर दोगे, दैट मीन्स 5. ओके, अगर ये छोटा है, यहाँ आपका नंबर हंड्रेड्स प्लेस पे 4 है और यहाँ आपका 5 से ये छोटा है. यस, सो आप कुछ नहीं करोगे. नो चेंजेस. Okay, now in this question we can see जो 8 है, 8 is greater than 5. Yes, we can see that the 8 is greater than 5. So what you will do, you will increase this thousand place, increase by 1. तो ये आपका 3 है, increase हो जाएगा तो 4 बन जाएगा. Yes, so what will be your nearest thousand आपका बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा, ये वाला नंबर 4 बन जाएगा. So your nearest thousand will be 14,000. This is your answer, C. Likewise, for 25,318, in this you have to see nearest 10,000 का करना है आपको ये नंबर. ओके, तो आपको क्या करना है, थाउजेंड्स प्लेस को देखना है. ओके चिल्ड्रन, so your thousandth place is 5. थाउजेंड्स प्लेस पे कौन सा नंबर है, 5. तो आपका ये 5 क्या हुआ, ये 5 आपका इस 5 के इक्वल है. यस, सो व्हाट यू विल डू, आप जो ये थाउजेंड्स प्लेस का नंबर है उसको 1 से इंक्रीज कर दोगे. इंक्रीज
बाय 1। तो ये 2 था, इंक्रीज होकर ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यस चिल्ड्रन, इंक्रीज होके आप इसको 3 कर दोगे, सो योर आंसर विल बी 30,000। सी, like this I'm going to do. Now children, let's quickly do our exercise. So your first question is saying that you have to round off to the nearest thousand. Nearest thousand आपको round off करना है. Okay. So children, your answer. Let's do answer. Exercise 3.3. Page number 31. The first question, A part we are going to do 8,312. So children, what you have to do, आपको nearest thousand देखना है. You have to see nearest thousand. Okay, your number is 8,312. So nearest thousand में आप कौन सी place value check करोगे? Which place value you are going to check? Check hundreds place value. आपकी hundreds place value पे 3 है. Check whether it is greater than or equal to 5. ये 3 5 से बड़ा है? Yes? No. 3 is smaller than 5. 3 is smaller. 5 बड़ा है. Yes? 5 बड़ा है. So what you will do, आपका ये no change. ठीक है? तो ये no change होगा. कुछ भी change नहीं होगा. So आपका जो thousands place है वो बिल्कुल change नहीं होगा. So your answer will be, आपको nearest thousand करना है. आपका answer होगा nearest thousand का 8,000. Okay children, your B, question B is your homework. Round off to the nearest 10,000. Now you have to do the nearest 10,000. Question 2 का आपको nearest 10,000 करना है. Your number is 23,809. So children, what you are going to see, you have ones, tens, 100, 1,000 and 10,000. आपको nearest 10,000 करना है, तो you will see thousands place. Your thousands place, is it greater than or equal to 5? No, it is less than 5. So children, अगर 5 से छोटा है, आपकी 10,000 प्लेस पे कोई चेंजेस नहीं आएंगे. नो चेंज. ये 2 है, 2 ही रहेगा. देयर विल बी नो चेंज. अगर बड़ा होता तो आप चेंज करते, क्या करते, 1 डिजिट इंक्रीज कर देते. तो 2 है तो ये 3 हो जाता. सो योर आंसर विल बी 20,000. This is your nearest 10,000. This question is your nearest 10,000. Now your next question is your homework. Nearest 10,000 आपका क्या है? Of 23,809 is this. Okay. Okay, children. So let's quickly see your next question. इसी की तरह आपको ये वाला क्वेश्चन भी करना है. ये आपका होमवर्क है. So find actual and estimated sum by rounding off to the nearest thousand. So children, firstly आपको actual addition करना है. ये 1 plus 0 is 1. 8 plus 3 is 11. यहाँ बन जाएगा 9 plus 1 10 plus 2 12 and here 1 8. So your actual तो ये हो गया. Now you have to estimate. अब इन numbers को estimate करना है और उसके बाद आपको addition करना है. ठीक है.
क्वेश्चन 3A, एक्चुअल सम करना है सबसे पहले. द नंबर इज 3281 प्लस 4930. एक्चुअल सम आपका हो जाएगा ये दिस इज योर एक्चुअल सम. नाउ यू हैव टू डू नियरेस्ट. अब इनका नियरेस्ट 1000 करना है एंड फिर आपको एडिशन करना है. ओके चिल्ड्रन, सो नियरेस्ट 1000 ऑफ 3881. what you will see, आप hundreds place को देखोगे, this is less than 5, so there will be no change. कोई भी change नहीं होगा. कहाँ पे? at thousands place, no change. so your answer will be, what will be your answer? ये कोई भी change नहीं होगा. so your nearest 1000 will be 3000. okay, अब next number है 4930. okay, quickly see your hundreds place. Hundreds place देखो, is 9 greater than 5? yes, 9 is greater than 5. so what you will do, ये 1000 place है. yes, 4 is on thousands place. so what you will do, increase. आपको increase करना है. increase by digit 1. so this is your 4. आपका क्या आंसर हो जाएगा? you will increase it by 1. so your round off will be 5000. now what you have to do, you have to do sum. किसका? जो ये राउंड ऑफ हुआ है उसका आपको सम करना है. ठीक है, now you have to sum estimated number को, sum estimated number. so your answer is 3000 plus 4930, that is 4930. your answer is 7000. this is your estimated answer. okay children, likewise you will do your next question. now quickly let us do question number 4. in this you have to do nearest 10,000. nearest 10,000 you have to do. so your actual number, first you will find out actual, then you will find out estimated addition. okay, your question is 78,515, and what you have to add, 13,290. you have to add 13,290 in it. okay, so 5 plus 0 is 5, 9 plus 1 is 10, 1 will carry it forward, this will be 8, this is 12, and this is will be 9. now what you have to do, अब आपको इसका round off करना है. yes children, so मैं आपको एक करके बता रही हूँ. you will do next 78,515. which place value you will see? you will see, if the question is asking 10,000, आपको nearest 10,000 करना, तो children you will see thousands place value. okay, so student, this 8 is greater than 5. what you will do, आपका यहाँ change होगा. what you will do, increase by digit 1. so this is 7. now you will increase it by digit 1. yes, so इसका round off क्या हो जाएगा? increase करोगे 8 होगा, 80,000. so your round off for 78,515 is 80,000. now quickly let us do the round off of 13,290. you will see which place value you will see. yes, thousands place value. is it greater than 5? no, this is less than 5. so at 10,000 place there will be
नो चेंज। ओके, अगर ये ग्रेटर देन 5 होता, देखो यहाँ पे ये ग्रेटर देन 5 है, यस 8, that then you have changed, increase it by 1, so there will be no change, that means the answer is will be 10,000। 1 आपने उतार दिया and you have to see the nearest thousand, so nearest thousand क्या है इसका, या तो 10,000 होगा या 20,000 होगा, ठीक है। अगर ये 5 से 1000 बड़ा होता, 3 बड़ा होता, तो आपका नियरेस्ट जो होता वो 20,000 होता। yes, so there will be no change। The nearest thousand of 13,290 is 10,000। Now what you have to do, you have to sum it. So this is your answer. Okay, children. So let us quickly. Your next question will be your homework. This one is your homework. Okay, students. Now this is your fifth question. Abhay spent 2,310 on shoes and 1,872 on books. So how much he spent on shoes? Question number 5. Spent on shoes. कितना amount कर रहा था इस spent? 2,310. Then spent on book. Books कितने की खरीदी थी? 1,872. Now children, what you have to do, you have to estimate the cost he has to pay. Okay, so estimation करना है, you will do estimation. The question is 2010. अब estimation होगा या तो ये 2000 होगा या ये 3000 होगा. How will you see in this? You will see hundreds place. Is it greater than 5? No, this one is smaller than 5. 5 बड़ा है. So tens thousands place पे no change. Okay. अगर कुछ change नहीं है, 2 ही है तो क्या होगा आंसर? 2000 होगा. Okay. और जो next है आपका नेक्स्ट नंबर है 1872 1872। इसका या तो 1000 एस्टिमेशन होगा या 2000 एस्टिमेशन होगा। अब इसको देखने के लिए कि 1000 होगा कि 2000 होगा, व्हाट यू हैव टू डू चिल्ड्रन, यू हैव टू सी द हंड्रेड्स प्लेस। सो 8 इज ग्रेटर देन 5, 8 बड़ा है 5 से। आप यहाँ पे क्या करोगे, इंक्रीज। अब थाउजेंड्स प्लेस पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज बाय डिजिट 1। आप इंक्रीज कर दोगे, ये 1 है, इंक्रीज करोगे तो आंसर आपका 2000 हो जाएगा। यस, इंक्रीज करोगे 1 को तो 2000, सो दैट मीन्स 2000 इज योर एस्टिमेटेड नंबर। ओके, अब चिल्ड्रन नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको एस्टिमेटेड करना था। स्पेंट ऑन शूज, एस्टिमेशन कितना निकला था, 1000। देन स्पेंट on books, books का estimation 2000। Now you have to find total cost he has paid। total cost ये आप ऐड कर दोगे। 3000। So total cost is your answer 3000। Okay children, likewise you will do question number 6 is your homework। Let us quickly read what the question is saying। Question is saying Rahul has bought old car
of 71,819, new scooter of 22,010. So आपको what you have to do, estimate the total cost. You will estimate it to the nearest thousand and then you will find out the total cost. Okay, children. So thank you for today's class. If you have any doubt, you may ask.